Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today's topic is centralization. Determinants. Nature of organization. The nature of an organization is a significant factor in determining whether to centralize its leadership. This can be more impactful in an organization with a few employees or one that is a sole proprietorship or a partnership entity. Such organizations have a limited activities that can be efficiently and easily monitored by the top management team. In a larger companies with many employees and multiple offering, centralizing an organization becomes a challenging task. तो डिटर्मिनेंट्स में नेचर बताया जा रहा है कि कैसी ऑर्गेनाइजेशन होती है सेंट्रलाइजेशन में। एक इतनी बड़ी कंपनीज में जहां बहुत से एम्प्लॉयज होते हैं मल्टीपल ऑफरिंग, वहां पर आपको सेंट्रलाइजेशन करना इसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। Size of the organization. The scale of operation is an important factor when determining the business strategy of an organization. A centralized authority can efficiently manage small enterprises. एक centralized authority manage कर सकती है small enterprises को with a limited staff, जहां पर कम लोग होंगे. In contrast, this can become a challenging in organization with the multiple branches and large operation. अच्छा, ये सेम चीज चैलेंजिंग हो सकती है जब आपको बहुत मल्टीपल ब्रांचेस हो और लार्ज ऑपरेशंस हो। तो साइज भी ऑर्गेनाइजेशन का देखते हैं। नेचर ऑफ द वर्क. A centralized structure of work is most effective when an organization activities do not require high specialization. एक centralized structure of work जो होता है वो बहुत effective होता है when in organization activities, जब जहां पर आपको ज्यादा हाई स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. If a business is in an industry where all its activities require special attention and care, one person or a team may not be able to monitor it efficiently. Efficiency of the employee. The ability of the employee to take responsibility is an important factor for an organization management system. If the employee lacks skill and cannot take accountability for their action, अगर तो employee में ज़्यादा skills नहीं होंगे, वो ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा, तो जो पूरा company है उसका management करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. The management may not give them the authority to make decision, तो वो अच्छी तरीके से decision भी नहीं ले पाएगा. In such organization, the higher authorities hold the decision making power and provide instruction to the lower level team. तभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन में हायर अथॉरिटीज की जरूरत होती है, वैसे तो हर ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत है. होल्ड डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजंस लेना और उन्हें प्रोवाइड करना इंस्ट्रक्शन टू द लोअर लेवल टीम. Ability to delegate work. A manager ability to delegate work impact the structure of an organization. एक मैनेजर कैसे डेलीगेट कर रहा है, कैसे वर्क करवा रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो इंपॉर्टेंट होता है. इफ द मैनेजर आर अनेबल टू फेयरली डेलीगेट वर्क टू देयर सबॉर्डिनेट, इट कैन बी चैलेंजिंग टू मीट द ऑर्गेनाइजेशन गोल. जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो पूरा नहीं हो पाएगा अगर तो मैनेजर ही काम नहीं करेगा अच्छी तरीके से. इन सच केसेस it is necessary for the higher authorities to delegate tasks themselves. Facilitation of integration. Organization that wishes to achieve a common objective often facilitate the integration of their activities. Centralized management can make the process easy by devising a common program and strategies for all teams. So since the top authorities control activities and it becomes simple to track progress and make change as and when required. Okay. Thank you. Do like, share, and subscribe to my channel.